Okay, so This meeting is being publicly streamed. okay, so the topic we are discussing about electromagnetic induction. ठीक है जी? So electromagnetic induction is basically, it's not a big deal. It's quite easy topic, and if you are able to handle electromagnetism basic discussion or basic concepts, it is quite clear. तो electromagnetic induction में कुछ चीजें हमने याद ये रखनी है कि what happens, the current is induced due to what? Current is induced. It is not basically a current which is by the battery. So current is induced without any voltage source. That is prime factor. Without any voltage source. Okay, is it clear to you? Without any voltages, current is induced. Second thing, आप क्या कर सकती हो कि there is very important concept of the current. कि current is induced due to motion of the magnet. Current is induced due to motion. So if you are able to handle these two games, it is quite clear. Okay, when there will be motion either in the magnet or in the coil, the current will be there. और दूसरी बात मैंने आपको बोली कि there would not be any voltage source connected. Okay, तीसरी बात ये है कि this current always oppose the motion of source causes it. Okay, oppose the motion of source causes it. Okay, that is why it is considered as the negative current. ये बहुत important चीज आप लोगों को बता रहा हूँ कि so it is considered at, ये सारे points लाजिमी आपके दिमाग में होने चाहिए as negative current. Okay, and once it is negative, how you will use the thumb principle or thumb rule to find its direction? Its direction is determined by Fleming's right hand rule. याद रखना है, ठीक है? Its direction is represented, direction is determined by, yes, which rule? Fleming's Yes, right. खदीजा ना, इसीलिए पूछा है तुमसे, राइट हैंड रूल, ठीक है? बिकॉज इट इज नेगेटिव, मैंने ऊपर मेंशन किया ना, एंड आई टोल्ड यू बिफोर कि ऑल नेगेटिव एंटिटीज इन दिस magnetism will be dealt, or they would be traced by right hand rule, and all positive quantities would be dealt by left hand rule. ये clear है? Yes, sir. ओके, फिर इसमें आपके पास आगे चल के दो बातें याद रखनी है आपने, कि बल्कि इसी के साथ ऐड अप कर रहा हूं, आई हैव एडेड वन थिंग कि नो मोशन नो करंट, नो मोशन नो करंट, नो वोल्टेजेस और नो ईएमएफ. इज दिस क्लियर? ये सब पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखना. अभी मैं डिटेल में तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना, बाय द बेसिक कॉन्सेप्ट. दिस आर जस्ट, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू. तो नो मोशन नो करंट, रैपिड मोशन मोर करंट, ठीक है? इफ द मोशन विल बी रैपिड, rapid motion, more current, or EMF, right? In the same way, if the motion is reversed, reverse motion, reverse current. ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. ये सब बातें आपने याद रखनी है. एंड वन मोर थिंग, देयर इज नो कैलकुलेशन एट ऑल, नो कैलकुलेशन फॉर यू, ठीक है? तो फिर आपके लिए अच्छा हो गया कि नो कैलकुलेशंस एट ऑल.
only transformer. तो ट्रांसफार्मर पे जब हम लोग पहुंचेंगे देन आई विल टॉक अबाउट. सो विदाउट ट्रांसफार्मर देयर आर नो कैलकुलेशंस. ओके, तो अगर थ्योरी है तो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू आर आस्क्ड बाय द एग्जामिनर? वन थिंग दैट दिस डील्स विद Faraday's law, of electromagnetic induction. You have to know about the statement of that. ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या लिखोगी? दैट इज दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ flux, or sorry, you can simply start from here. The magnitude of EMF or the EMF induced, or the amount of induced EMF. Amount mean magnitude, both are same things. You can write anything, amount or the magnitude of induced EMF is equals to what? EMF की जगह आप करंट भी लिख सकती हो. Induced EMF or current is directly proportional to what? The rate of change of flux. Rate of change of magnetic flux. Rate of change of magnetic flux. Just write this definition statement bulke, and don't alter it. Okay, is it clear to you? Yes, sir. Rate of change of flux, yani amount of magnitude is directly, or amount of or magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux. जब आप लोग ए लेवल्स में जाओगे तो आपको इसकी कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेंगी, बट स्टिल हियर वी ऑल आर जस्ट हैविंग सम सॉर्ट ऑफ यू नो definition or statement of this all. ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, उसके बाद आपने याद रखना है लेंजेस लॉ. ठीक, बिकॉज आई हैव actually described everything related to this law, that it deals with that there is motion, then if there is motion then it would happen EMF ज्यादा होगा, and if there would be less motion EMF would be less, etc etc. अब मैं थोड़ा सा इसमें एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है for 3 to 4 mark theory question. What is that question then? That is the mechanism of induced EMF. Okay, mechanism of induced EMF. Simple mechanism of induced EMF is, you have to write 4 points. First of all, you will say that when the coil or conductor, whatever that is a wire, that is a piece of metal, whatever that is, if a coil or a conductor is moved in a magnetic field, it cuts the magnetic field lines. ये पहला पॉइंट लिखना है आपने, ठीक है? Magnetic field lines. Is this first point clear to you? Yes, sir. लाजमी लिखना है, इसके बगैर ऑप्शन नहीं है. Second point is, once you have stated that there will be a cutting of magnetic field lines, the motion will cause, or motion causes, a change in magnetic flux cut by the conductor.
ठीक है, आपने चेंज को लाजमी ऐड करना है. वंस यू विल नॉट ऐड द चेंज, योर आंसर विल नॉट बी एक्सेप्टेबल. सो चेंज इज मैंडेटरी. You have to write this. When there is a change in the magnetic flux cut by the coil, it causes what? What does it cause? It causes the magnetic, sorry, induced EMF. क्या होता है फिर आपने क्या बोलना है? It causes an induced EMF. Yeah, according to Faraday's law, the rate of change of flux causes induced EMF. So the rate of change of flux causes induced EMF in conductor or coil. ठीक है, ये आपने लास्ट में लिखना है. सो वंस यू विल relate that, you will obtain all the marks inshallah. There would not be any issue. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Any confusion? No, sir. Okay, उसके बाद हमारे पास आता है lenses law. You have to state what is lenses law, and then you have to mean yes, we have to deal the application areas. Lenses law आपको ये कहता है कि the direction of induced EMF, the direction of induced EMF or current is in such a way that it opposes the direction of source causes it. ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये आपने एज इट इज लिखनी है, या आप ये भी लिख सकती हो इसकी जगह कि the current, induced current, sets a magnetic field in such a way, the induced current sets a magnetic field in such a way that opposes the motion of source causes the EMF, causes it. That's it. Actually, why I have written this all statements, because they are asked to you as it is. अब आपको different questions दिए जाएंगे, and those questions are of different structure, different type. Mostly जो एक question आपसे पूछा जाता है, and that is if you have a coil and that coil has some poles on it, let's say you have got current. Okay, for example, this is not the current, there is no current at all. Let's say I'm just going to connect a voltmeter with that, an emitter with that, and let's say I have a magnet. So magnet go, its north is there, right? Now you are moving north towards this, north is moving towards. So क्या होगा? The coil and x of the coil, and this is end y of the coil. So and x of the coil would oppose its motion. How? It would repel it. Like poles generate करना पड़ेगा ना opposition के लिए, है ना? Yes, sir. Opposition के लिए क्या करना पड़ेगा? Opposition is due to, in that case, like poles. Whenever you are moving two magnetic materials towards each other, they will repel each other due to the north pole formed up. ठीक है, due to the north pole formed up. It means कि coil का north इधर बनना चाहिए, south इधर बनना चाहिए. Once the north of the coil is this way, you have to apply the thumb
and thumb would be pointing towards left, and current in the coil will be something like this. ठीक है? And it means that this is the direction of fluctuation of the current. Is it? Are you getting my point? Yes, sir. अब अगर आप नॉर्थ को, अब देखो आप करंट को रिवर्स कैसे कर सकती हो? यू कैन रिवर्स द करंट ओनली बाय टू, ये पासवर्ड का क्वेश्चन भी आया हुआ है, either move north away. Once you are moving the north away, it would be quite easy game. Now the coil is to stop this motion, यानी coil would not allow this to move away. तो coil क्या करेगी? Coil would cause an attraction. ठीक है? Coil ने क्या करना है? It would cause an attraction. So end X and end Y are in such a way that it would cause an attraction. So अवे जाने के लिए उसे क्या, अवे जाने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? Away motion is stopped by attraction. This is towards motion. And away motion is stopped by, yes, attraction. And attraction is by unlike poles, isn't it? Yes, sir. मेरा बेटा ये चीजें सारी की सारी थ्योरी है, इसलिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बोरिंग है, बट अब मैं इसीलिए लिखवा के दोबारा आप लोगों को बता रहा हूँ कि वंस यू आर डन देयर इज नो अदर राउंड फॉर दैट. तो अब ये क्या करेगी? व्हाट वुड बी एंड एक्स? व्हाट इज योर आइडिया? It would become south, is it? And this would become north. So once it is north, तो direction of the current आप देखो ऊपर वाली coil में और इसमें, the direction of the current would be reversed. Now if you connect an emitter here, that emitter would be going to give you a sort of reading that is आपका current इधर जा रहा है this way, yes, in this way. आई थिंक ऊपर मैंने कॉइल थोड़ी सी गलत बना दी है शायद. लेट मी ड्रॉ द सेम कॉइल हेयर. कॉइल सेम करेंगे तो फिर आपको ना इसकी पोलैरिटी आसानी से क्लियर हो जाएगी. दिस इज द कॉइल. अब आप देखो व्हाट विल हैपन टू दिस कॉइल. नॉर्थ इज मूविंग टुवर्ड्स, इट मींस it will create north here and it would create south on the other side. ठीक है ना? Yes, sir. So due to that, the direction of the current would be reversed. तो करंट की डायरेक्शन आपकी किधर को हो जाएगी? That would be in this way. ठीक है? This is the direction of the current. So once this is the direction of the current, this would be in this way, this would be in this way, and this emitter will give you a reading which is basically opposite to that. ये बात क्लियर है? जी. तो आप ये कर सकती हो. It is quite simple that direction of current can be reversed by, direction of induced current can be reversed by what? हाँ जी बताइए. Moving the magnets in opposite direction. So ठीक है? basically changing the direction of the magnet. Yes, moving the magnet in opposite direction. और एक और भी था, like pulling the magnet slowly out of the coil or something. वो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन वो मैं पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ. ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मोशन से रिलेटेड है. ये बात क्लियर है? इसमें कोई और चीज तो नहीं है आपके जहन में जो इस तरह का आपको लग रहा हो कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन एंड आई एम नॉट गोइंग टू एड्रेस दैट?
No, sir. याद रखना। अब इसकी बेस पे देयर आर टू एप्लीकेशंस ऑफ दिस, and those two applications are basically, one is transformer and the second one is alternating generator, AC generator. ठीक है, ये बात क्लियर है? आ जाओ। ओके जी, तो एस ट्रांसफार्मर आपको पहले बता देता हूँ बेसिकली, बिकॉज देयर आर सम कैलकुलेशन क्वेश्चंस, सो दैट इज व्हाई। ट्रांसफार्मर क्या होता है? इन ट्रांसफार्मर इज द ओनली topic in which the calculations are asked to you. The transformer is a device which steps up or steps down the voltages. Steps up or steps down the voltages. ठीक है, आप EMF भी कह सकते हो. So it means that in a transformer, either it would be step up transformer or it would be step down transformer. So let's say if I think okay, in a step up transformer, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेगा? इट वुड इंक्रीज द करंट, सॉरी इंक्रीज द voltages, increase the voltages. I will draw the diagram and structure of the transformer as well. और ये क्या करेगा? It will decrease the current. अगर आपके वोल्टेजेस इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो योर करंट वुड बी डिक्रीज। ये बात लाजमी याद रखनी है। करंट डिक्रीज्ड, और ये यूज कहाँ पे होता है? यस, वेयर इज इट यूज्ड? बता सकती हो? यूज्ड इन हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस। ठीक है, and why? To reduce the power losses, reduce the power loss। ठीक है, एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होता है? सॉरी, स्टेप डाउन। Oh, sorry, one more thing I wanted for step up. In step up transformer, there are some equations, and those equations are basically number of turns on the secondary coil are greater than number of turns on the primary coil, so that the voltages on the secondary coil would be greater than voltages on the primary coil। ठीक है, Yes, sir. and current on the secondary coil will be less than current on the primary coil. But overall, what is the game of this transformer? That is your entire voltages and current defines the power। तो आपने ये याद रखना है कि इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। ठीक है, क्या याद रखना है? हाँ चेंज नहीं होता। ना, पावर इनपुट, इनपुट पावर मैं कंप्लीट लिख लेता हूँ। इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट। दिस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो मैं आगे चल के इसको लिख देता हूँ, डोंट वरी। अब स्टेप अप में चले जाते हैं, स्टेप डाउन में, सॉरी टाइम शॉर्ट है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कंप्लीट करवा लूँ। तो मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है,
लेट्स राइट द इक्वेशन फर्स्ट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मेन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या हैं? Number of turns on the secondary will be less than number of turns on the primary. Voltages on the secondary will be less than voltages on the primary, and current on the secondary will be greater than current on the primary coil. ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब इसमें जैसे आपको मैंने बता दिया कि नंबर ऑफ टर्न्स आउटपुट पे ज्यादा होते हैं, सॉरी कम होते हैं, वोल्टेज भी कम होता है, एंड इट्स यूज इज, वेयर इज इट यूज्ड? इन हाउस होल्ड अप्लायंसेस। ठीक है, जैसे आपका लैपटॉप का चार्जर हो गया, जैसे आपका अडॉप्टर हो गया, इन हाउस होल्ड अप्लायंसेस। ठीक है, ये बात याद रहेगी। Yes, sir. ओके, तो बेसिकली वट एवर इज द ट्रांसफार्मर, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज समथिंग लाइक दैट। It consists of two coils. They are basically wrapped around the core. ठीक है, और कोर आपकी लाइक ठीक है, दिस इज बेसिकली द कोर। दिस इज द कोर। ठीक है, ऐसे। ओके, अब इस कोर में ना मेरा बेटा, आपने दो बातें याद रखनी है। देयर आर कॉइल्स, एक्चुअली कोर इज समथिंग लाइक दिस। ये आप यूँ समझो 3D डायग्राम की बजाय मैं इसको 2D में लेके चला जाता हूँ, इट वुड बी फाइन इन 2D, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, हियर इज अ कॉइल, ये आपका ठीक है, एंड ऑन दैट कोर देयर आर द कॉइल्स, एंड दोज कॉइल्स आर समथिंग लाइक दिस। आपकी कॉइल अगर हम लोग इसके ऊपर वाइंड करेंगे ना, it would be something like this. ये ठीक है, in the same way if you have this, यार छोड़ दो ना अभी, यार फ्लिप ऑटो रोटेशन का वो नहीं होगा इसमें, मैं करवा दूं, सॉरी। दिस इज द कॉइल। अब आप देखो इन दिस ट्रांसफार्मर, दिस इज कॉल्ड योर, दिस ऑल इज कॉल्ड योर प्राइमरी पार्ट, this one is your core, this is your primary coil, okay, this is your secondary coil, ओके। सो ट्रांसफार्मर का इनपुट हमेशा आपके पास क्या होता है? इट इज ऑल्टरनेटिंग। ठीक है, ये बात याद रखिए,
and output is always alternating. ये भी याद रखना है. Are you getting my point? So this is basically a structure of the transformer. तो जब भी आप इस ट्रांसफार्मर में ये करते हो कि the number of turns here, these are the number of turns, right? I can say this is the number of turns on the primary coil, and these are the number of turns on the secondary coil. ठीक है? So इसका जो input होता है, that input is your VP and output is your VS. Okay, is it clear to all? ठीक है. तो आपकी जो इक्वेशन है ना ट्रांसफार्मर की, इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, वो बहुत मैटर करती है. अब मैं समझा सकता हूं आपको. इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द पावर. ठीक है. अब पावर के ऊपर कैसे हमारी इक्वेशन चलती है, दैट इन एन आइडियल केस ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज कंसिडर्ड, आपके लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, 100% एफिशिएंट. ठीक है. When the transformer is 100% efficient, what does it mean? That the output power is always equals to input power. अब पावर क्या होती है आपको याद हो अगर, so power is equals to V times I. Generally power is equals to V into I, यानी voltage is into current. So if it is output power, that is basically the power at the secondary coil or power across secondary coil, है ना. And if this is input coil, power, so it is across the primary coil. तो आप अब इसको VSIS कह सकते हो, and this can be written as VPIP. So this is one of the equation which is basically considered as the equation of the transformer. VSIS is equal to VPIP. So from this onward हमें ये भी पता होना चाहिए कि VS divided by VP is same as NS divided by NP. Similarly, there is another equation that VS divided by VP is equals to IP divided by IS. और इसी से मिलती जुलती एक और इक्वेशन है जो आपने याद रखनी है, that VS divided by VP is equals to, sorry, IS divided by IP is equals to, now this is the equation of current, IS divided by IP is equals to NP divided by NS. ये बात याद रखनी है, ये सारी इक्वेशंस मैंने आपको पढ़ा दी है. ठीक है. इज देयर एनी कंफ्यूजन इन दैट वन? क्लियर है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ट्रांसफार्मर में याद रखनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको मैं कह सकता हूँ, दैट इज ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क ऑन DC power supply. Whenever there is a DC source, transformer will never work. ठीक है. So आप कह सकते हो कि ट्रांसफार्मर does not work at DC. ठीक है. उसकी वजह ये है, आपसे वजह भी पूछता है, द रीजन दैट इट नीड्स अ वेरिएबल magnetic field which is only possible if current is variable. Current is variable at the primary coil. ठीक है. At primary coil. Now there is a working of transformer. In short words, 4 marks का क्वेश्चन आता है. Working principle of transformer
that is an alternating magnetic field is produced. It is not induced, it is produced at. अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हो? Assalamualaikum, sir. वालेकुम सलाम। जस्ट बेटा 5 मिनट हमारे लेंगे, वी आर डिस्कसिंग अ टॉपिक, तो आप भले Okay. ज्वाइन करना है तो आप भी ज्वाइन रखो, इशू नहीं है। इसके बाद मैं इसी क्लास को कन्वर्ट कर दूंगा आपकी क्लास में, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. ठीक है, बस आप ज्वाइन रहो, नो इशू एट ऑल। आई एम जस्ट वाइंडिंग अप द टॉपिक। ओके, सो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या कह रहा हूं मैं? इट इन एन ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड एट प्राइमरी कॉइल। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपने ये लिखना है कि इट causes an alternating magnetic flux in the core। और ओके, इसको मैं मॉडिफाई करवा के आपके लेवल पे लेके आ जाता हूं। it causes, or it mean magnetic field, the magnetic field is transferred from primary coil to secondary coil to secondary coil by core. So you have to indicate the function of the core also. 2 points. Third point is the variable magnetic field is cut by the secondary coil। देखो ना, at this output there is a secondary coil, if you see there is a secondary coil। So let me show you the path of the magnetic field। The magnetic field lines are passing through this and they are cut, so they are passing and they are cut by the secondary coil। So once they are cut by the secondary coil, there is the variable magnetic field lines are cut by the secondary coil, so fourth point or fourth mark, the rate of change of flux causes an induced EMF at the secondary coil। Rate of change of flux causes an induced EMF at the output of secondary coil। This is a detailed, comprehensive answer. Okay? At the output of secondary coil. This is the way how your transformer works. And you can simply add one more point, fifth point, that the output is alternating. Okay? Output is alternating, either step up or step down. Either stepped up or stepped down। Clear है? Is it clear to you? जी Yes. So अभी हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया है इसका, एंड दैट इज योर एसी जनरेटर। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। होपफुली अगर तुम्हें टाइम मिलता है तो वीडियोस देख लिया करो, ताकि अभी रिवीजन में तुम्हारे पास, मैं सारे टॉपिक से बात है रिवीजन में नहीं करवा पाऊंगा, बट आई वुड लव टू अपलोड द वीडियोस के तुम अपनी टाइम मैनेज करके ये सारा मतलब वहां से देख सको। ठीक है बच्चे? ओके सर। ठीक है, सी यू देन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।